रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। राम रामाय नमः। श्रीरामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्रीरामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि। श्रीरामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्रीरामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडिलो, मित्रों, younger brothers and sisters and children and elders. Welcome to Sri Välmiki-Rāmāyaṇa original Sri Rama Katha published by Gita Press Gorakhpur in English as well as in Hindi. This is episode number 14 and बालकांड canto 18 सर्ग 18वां आज लेने जा रहे हैं हम। अब तक हमने देखा कि चारों रानियों को उन्होंने पायस यानी कि जो खीर बोलते हैं, द स्वीट मिल्क एंड चावल खिला दिया है। कई कौशल्या, कई सुमित्रा तीनों को। तो आज देखते हैं आगे। जय श्री राम। भगवान श्री राम की जय हो, जय जयकार हो। श्री राम भगवान की जय हो, जय जयकार हो। एपिसोड नंबर 14 बालकांड सर्ग 18 सर्ग यानी कि 18वां सर्ग। राजाओं तथा ऋष्यशृंग को विदा करके राजा दशरथ का रानियों सहित पुरी में आगमन। श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के जन्म, संस्कार, शील, स्वभाव एवं सद्गुण, राजा के दरबार में विश्वामित्र का आगमन और उनका सत्कार। Advent of Sri Ram, Bharat and others festivities in heavens as well as in the Ayodhya, their investiture with the scared thread, the arrival of Vishwamitra. महामना राजा दशरथ का यज्ञ समाप्त होने पर देवता लोग अपना अपना भाग ले जैसे आए थे वैसे लौट गए। Thus celebrated Ashwamedh sacrifice as well as intended to procure male progeny performed by the high-souled emperor having been concluded, the immortals who personally attain it return even as they had come after receiving the respective share of the offspring made in the sacrifice. दीक्षा का नियम समाप्त होने पर राजा अपनी पत्नियों को साथ ले सेवक, सैनिक और सवारियों सहित पुरी में प्रविष्ट हुए। Having completed the sacred vow of chastity, etc., taken at the time of the consideration, the king proceeded towards his capital, accompanied by his wives and along with his servants, army and conveyance. भिन्न भिन्न देश के राजा भी जो उनके यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए थे, महाराज दशरथ द्वारा यथावत सम्मानित हो मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋष्यशृंग को प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने देश को चले गए। Having been honored according to their respective rank by the emperor who had just concluded his sacrificial performance, the king too that had assembled for the sacrifice returned full of delight to their territories, bowing low to the Vasishtha, Rishyashrunga, Vamdeva and other the foremost of sagas. अयोध्यापुरी से अपने अपने घर को जाते हुए उन श्रीमान नरेशों के शुभ्र सैनिक अत्यंत हर्षमग्न होने के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे।
clad in a white uniform presented by the emperor, and greatly delighted the troops of those glorious kings, even as the latter proceeded to their respective homes from the city of Ayodhya, shone brightly. उन राजाओं के विदा हो जाने पर श्रीमान महाराज दशरथ ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे करके अपने पुरी में प्रवेश किया. The king, having dispraised the glorious king Dasharatha, who had gone out in state to see them off, entered the city once more, placing the foremost brahmanas, Vasishtha and others ahead of all. राजा द्वारा अत्यंत सम्मानित हो ऋष्य श्रृंग मुनि भी शांता के साथ अपने स्थान को चले गए. उस समय सेवकों सहित बुद्धिमान महाराज दशरथ कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे उन्हें पहुंचाने गए थे. Duly honored and being followed to the some distance by the wise king with his entourage, Rishyashrunga to depart with his wife Santa. इस प्रकार उन सब अतिथियों को विदा करके सफल मनोरथ हुए राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति की प्रतीक्षा करते हुए वहाँ बड़े सुख से रहने लगे. Having thus sent away all them and fully realized his ambition of performing a horse sacrifice, the king dwelt happily in his own capital, eagerly awaiting the birth of the son to him. यज्ञ समाप्ति के पश्चात जब 6 ऋतु बीत गई, तब 12वें मास में चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया. भगवान श्री राम की जय हो, जय जयकार हो. उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ये 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे तथा लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान थे. वे विष्णु स्वरूप हविष्य या खीर के आधे भाग से प्रकट हुए थे. कौशल्या के महाभाग पुत्र श्रीमान इक्ष्वाकु कुल का आनंद बढ़ाने वाले थे. उनके नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा थी. उनके ओठ लाल, भुजाएं बड़ी बड़ी और स्वर दुंदुबी के शब्द के समान गंभीर था. इन द मीन टाइम 6 seasons, each consisting of 2 months, rolled away after the sacrifice was over. Then on the 9th lunar day of the bright fortnight of Kaitra, यानी कि चैत्र, the 12th month after the conclusion of the sacrifice, when the Ashtarim Punarvashu, praised over by Aditi, was in the ascendant and a lagna में, and many as 5 planets, which the sun, Mars, Saturn, Jupiter and Venus happened to be the exalted, appeared in the zodiac sign of Maize or Aries, Makara or Capricorns, Tula or Libra, Karka or Cancer, and Meena or Pisces respectively. And Jupiter in conjunction with the moon appeared in the zodiacal sign of Karka. Mother Kaushalya, the eldest wife of Dasarath, gave the birth of highly blessed son named Jai Sri Ram. Jai Jai Sri Ram. Ram Bhagwan ki jai ho. Who was no other than the Lord of the universe and adored of all the 3 worlds, the delight of Ikshvaku race, who represented 1/2 of Lord Vishnu and who endowed with the auspicious divine marks,
in that he had eyes tinged with red, possessed exceptionally long arms and ruddy lips, and a voice resembling the sound of cattle drum. उस अमित तेजस्वी पुत्र से महारानी कौशल्या की बड़ी शोभा हुई, ठीक उसी तरह जैसे सूर्यश्रेष्ठ वज्रपाणी इंद्र से देव माता अदिति सुशोभित होती थी। तदंतर कैकई से सत्य पराक्रमी भरत का जन्म हुआ, जो साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूपभूत पायस खीर के चतुर्थांश से भी न्यून भाग से प्रकट हुए थे। ये समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। श्री भरत जी की जय हो, भरत जी की जय हो। कौशल्या shone brightly with that sun possessed of immense glory, even as Aditi, the mother of gods, with Indra, and the wielder of thunderbolt, the foremost of gods. Next, through the womb of Kaikeyi, the youngest wife of the Dashratha, King Dashrath, was born Bharat, Bharat Dev ki jai ho, possessed of the true valor, who actually represent a quarter of Lord Vishnu and was adorned with the divine virtues. इसके बाद रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन दोनों पुत्रों को जन्म दिया। श्री लक्ष्मण देव की जय हो, श्री शत्रुघ्न देव की जय हो। ये दोनों वीर साक्षात भगवान विष्णु के अर्धभाग से संपन्न और सब प्रकार के अस्त्रों की विद्या में कुशल थे। Sumitra, the second wife of King Dashrath, then gave the birth of two twin sons, Lakshmana and Shatrugna, both valiant and skilled in the use of kinds of missiles and jointly representing a portion 1/6 of the Lord Vishnu. जय श्री भगवान लक्ष्मण जी, श्री शत्रुघ्न जी की जय जयकार हो। भरत सदा प्रसन्न चित रहते थे। उनका जन्म पुष्य नक्षत्र तथा मीन लग्न में हुआ था। सुमित्रा के दोनों पुत्र आश्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में उत्पन्न हुए थे। उस समय सूर्य अपने उच्च स्थान में विराजमान थे। भरत ऑफ cheerful mind was born when the constellation Pushya was in the ascendant and Lagna, and the sun had entered the zodiac sign of Pisces, while the twin sons of Sumitra were born when the constellation Aslesha was in the ascendant and Lagna, and the sun had reached the meridian touching the zodiac sign of Karka, Cancer. राजा दशरथ के ये चारों महामनस्वी पुत्र पृथक पृथक गुणों से संपन्न और सुंदर थे। ये भाद्रपदा नामक 4 तारों के समान कांतिमान थे। पृष्ठदाता कहते हैं, भाद्रपदा नक्षत्र को इसके 2 भेद हैं, पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद। इन दोनों में 2-2 तारे हैं। यह बात ज्योतिष शास्त्रों में प्रसिद्ध है। The 4 high-souled sons of the emperor were born separately through the identical in essence and endowed with the transcendental virtue. They all resemble one another and weighed with the 4 stars, comparing the constellation Purva Bhadrapada and Uttar Bhadrapada in the splendor. इनके जन्म के समय गंधर्वों ने मधुर गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किया और देवताओं की दुंदुबियाँ बजने लगी तथा आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी।
The Gandharva sang melodiously, and the beehives of the Apsaras, celestial nymphs, danced, and neither kettle drums of the gods sounded of their own accord, and the shower of flowers dropped from the heavens. अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। मनुष्यों की भारी भीड़ एकत्र हुई। गलियां और सड़कें लोगों से खचाखच भरी हुई थी। बहुत से नट और नर्तक वहां अपनी अपनी कलाएं दिखा रहे थे। There was a great rejoicing marked with the crowds of the men in Ayodhya. Nay, the streets got crowded with the actors and the dancers, and were marked with the great rush of men. वहाँ सब लोग गाने बजाने तथा दूसरे लोगों के शब्द गूंज रहे थे। दिन दुखियों के लिए लुटाए गए सब प्रकार के रत्न वहाँ बिखरे पड़े थे। राजा दशरथ ने सूत मागध और बंदीजनों को देने योग्य पुरस्कार दिए तथा ब्राह्मणों को धन एवं सहस्त्रों गोदान प्रदान किए। The extensive roads of Ayodhya, which were noisy with the sound of song-star and those who play on the musical instrument, as well as with that of the others, such as the chanters of Vedas, minstrels, breeds, and the panegyrists, and were strewn with all kind of precious stone thrown by the people in order to signify their admiration of their song, etc., presented a gala appearance. The king bestowed presents worth giving on the belled singers, beard, and the panegyrists, and give away riches and cow in the thousands to the brahmanas. 11 दिन बीतने पर महाराज ने बालकों का नामकरण संस्कार किया। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने प्रसन्नता के साथ सबके नाम रखे। उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा। भगवान श्री राम की जय हो। श्री राम महात्मा परमात्मा थे। कई कुमार का नाम भरत रखा। भरत जी की जय हो। तथा सुमित्रा के एक पुत्र का नाम लक्ष्मण जी की जय हो। तथा दूसरे पुत्र का नाम शत्रुघ्न निश्चित किया गया है। रामायण तिलक के निर्माता मूल के 11 साह शब्द को सूतक के अंतिम दिन का उपलक्ष्य माना गया है। उनका कहना है कि यदि ऐसा न माना जाए तो क्षत्रिय द्वादश सूतक क्षत्रिय को 12 दिन का सूतक लगता है। इस स्मृति वाक्य से विरोध होगा। अतः राम जन्म के 12 दिन बीत जाने के बाद 13वें दिन राजा के नामकरण संस्कार किया, ऐसा मानना चाहिए। He further performed the naming ceremony with the respect to his son on completing 11 days. The impurity of the Kshatriya occasioned by the childbirth lasts the 12 days, and the Smriti taxes the naming ceremony of Kshatriya boys take place on the 13 days. The day after the birth of the Lakshman and the Shatrughna of 13 days after the advent of Sri Ram, which took the place 2 days earlier, supremely delighted the Sega Vasistha, and on behalf of the king made the eldest an embodiment of the Supreme Spirit known by the name of Ram, Bhagwan Sri Ram ki jai ho, and the son of Kaikai by the that of Bharat, Bharat ji ki jai ho, the first son of the Sumitra by that of the Lakshman, Lakshman ji ki jai ho, and the other by the that of Shatrughna on that occasion, Shatrughna ji ki jai ho, jai jaikar ho. राजा ने ब्राह्मणों, पूर्ववासियों तथा जनपदवासियों को भी भोजन कराया। ब्राह्मणों को बहुत से उज्ज्वल रत्न समूह दान किए। The Shegad on behalf of emperor fed the brahmanas
of the capital as well as of the entire kingdom of Kosala, and gave away to them, said Brahmana, a large heap of shining jewels. महर्षि वशिष्ठ ने समय समय पर राजा से उन बालकों के जात कर्म आदि सभी संस्कार करवाए थे। उन सब में श्री रामचंद्र जी ज्येष्ठ होने के साथ ही अपने कुल की कीर्ति ध्वजा को फहराने वाली पताका के समान थे। वे अपने पिता की प्रसन्नता बढ़ाने वाले थे। He further caused to perform the form of time to time with the respect to the four princes, all purificatory rites commencing from the jat karma and the ending with the upanayana or investiture with the scared thread. The eldest of them, Sri Ram, proclaimed the greatness of his race like a flag and proved to be the delight of his father. सभी भूतों के लिए वे स्वयंभू ब्रह्मा जी के समान विशेष प्रिय थे। राजा के सभी पुत्र वेदों के विद्वान और शूरवीर थे। सबके सब लोग हितकारी कार्यों में संलग्न रहते थे। Again he was esteemed by the created beings of Brahma, the self-born. All the four princes turned out to be the master of the Vedas and great heroes, and all were intent upon doing good to the people. सभी बलवान और समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। उनमें भी सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक तेजस्वी और सब लोगों के विशेष प्रिय थे। वे निष्कलंक चंद्रमा के समान शोभा पाते थे। उन्होंने हाथी के कंधे और घोड़े की पीठ पर बैठने तथा रथ हाँकने की कला में भी सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। वे सदा धनुर्वेद का अभ्यास करते थे और पिताजी की सेवा में लगे रहते थे। लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले लक्ष्मण बाल्यावस्था से, इफ़ यू वांट प्रॉस्पेरिटी you pray the Lakshman, because the Lakshman is the Lakshmipati, that is Lakshman. Lakshmi ki vruddhi, the enhancement of Lakshmi or prosperity, you pray the Lakshmana. श्री रामचंद्र जी के प्रति अत्यंत अनुराग रखते थे। वे अपने बड़े भाई लोकाभिराम श्री राम का सदा ही प्रिय करते थे और शरीर से भी उनकी सेवा में सदा ही जुटे रहते थे। शोभा संपन्न लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के लिए बाहर विचरने वाले दूसरे प्राण के समान थे। पुरुषोत्तम श्री राम को उनके बिना नींद नहीं आती थी। यदि उनके पास उत्तम भोजन लाया जाए तो श्री रामचंद्र जी उनमें से लक्ष्मण को दिए बिना नहीं खाते थे। He further caused to be performed from the time to time with respect to the four princes all purificatory rites commencing from the jat karma and ending with the upanayana or instanciure with the scared thread. The eldest of them, Sri Ram, proclaimed the greatness of his race like a flag and proved to be the delight of his father. Again he was esteemed by all created beings as a Brahma, the self-born. All the four princes turned out to be the master of the Vedas and great heroes, and all were intent upon doing good to the people. All were endowed with the wisdom and all were adorned with the virtue. Sri Ram, however, was exceptionally glorious of them all and possessed of true, unfailing prowess. Like the full moon in the clear sky, he was the beloved of the people and on horseback and in the various process of driving a chariot. He took the delight in the science of archery and was devoted to the service of his father Lakshmana, the promoter
of the fortune of those who sought his protection, was ever deeply attached from his very infancy to his deeply attached from his very infancy to the eldest brother Sri Ram, the delight of the world. He gratified the latter in every way. Lakshman, who was rich in the splendor, was a second life, as if were to Sri Ram, moving outside his body. Without him, Sri Ram, the foremost of men, did not have even a wink of sleep, nor did the partake of a dainty dish brought to him without Lakshman. जब श्री रामचंद्र जी घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए जाते थे, उस समय लक्ष्मण धनुष लेकर उनके शरीर की रक्षा करते हुए पीछे पीछे जाते थे। इस प्रकार लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न भरत जी को प्राणों से भी अधिक प्रिय थे और भरत जी का सदा प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते थे। इन चारों महान भाग्यशाली प्रिय पुत्रों से राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती थी, ठीक वैसे ही जैसे चारों देवता दिक्पालों से ब्रह्मा जी को प्रसन्नता होती है। Whenever Sri Ram, the celebrated ashishsir of Raghu, went out a hunting, mounted or horseback, Lakshman forthwith followed at the heels, armed with a bow and arrow and guarding him on his side. Shatrughna, the younger brother of Lakshman, was dearer to the Bharat even than the latter's own life, and Bharat likewise was ever dear to the Shatrughna. The said king Dashrath felt supremely delighted with his four highly blessed and beloved son of Brahma, the progenitor of the entire creation, with the gods, with the Indra, Varuna, Yama, Kubera presiding over the four quarters. When they got enriched with the wisdom, they were all adorned with the virtues. वे सब बालक जब समझदार हुए तब समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। वे सब लज्जाशील, यशस्वी, सर्वज्ञ और दूरदर्शी थे। ऐसे प्रभावशाली और अत्यंत तेजस्वी उन सभी पुत्रों की प्राप्ति से राजा दशरथ लोकेश्वर ब्रह्मा जी की भांति बहुत प्रसन्न हुए। Nay, they were modest, glorious, all-knowing and far-signed. King Dashrath, the father of them all, who were possessed of such unique glory and luminous splendor, felt rejoiced as Brahma, the ruler of the universe. Those tigers among the men too were attached to their Vedic studies, nay, devoted to the service of their parents, and were well versed in the science of archery. वे पुरुष श्री राजकुमार प्रतिदिन वेदों के स्वाध्यायन, पिता की सेवा तथा धनुर्वेद के अभ्यास में दत्तचित्त रहते थे। Now when their studies narrated completion, King Dashrath, whose mind was given to pity, deliberated with his family priests, the saga Vasishtha and the Vamdeva, and the relations such as King Rompada about the prince's marriage, even while that high-souled monarch was deliberating on the subject in the midst of his counselor, the great saga was Vishwamitra, who was possessed of unique glory, arrived at the place of King Dashrath, seeking the audience with the king, and addressed them gatekeepers as follows. एक दिन धर्मात्मा राजा दशरथ पुरोहित तथा बंधु बांधवों के साथ बैठकर पुत्रों के विवाह के विषय में विचार कर रहे थे। मंत्रियों के बीच में विचार करते हुए महामना नरेश के यहाँ महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र पधारे।
वे राजा से मिलना चाहते थे। उन्होंने द्वारपाल से कहा, तुम लोग शीघ्र ही जाकर महाराज को यह सूचना दो कि कुशिक वंशी गादी पुत्र विश्वामित्र आए हैं। उनकी यह बात सुनकर वे द्वारपाल बड़े दौड़े हुए राजा के दरबार में गए। वे सब विश्वामित्र के उस वाक्य से प्रेरित होकर मन ही मन घबराए हुए थे। राजा के दरबार में पहुंचकर उन्होंने इक्ष्वाकुल नंदन अवध नरेश से कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। उनकी यह बात सुनकर राजा सावधान हो गए। उन्होंने पुरोहितों को साथ लेकर बड़े हर्ष के साथ उनकी अगवानी की, मानो देवराज इंद्र ब्रह्मा जी का स्वागत कर रहे हो। विश्वामित्र जी कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी थे। वे अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उनका दर्शन करने के राजा मुख प्रसन्नता से खिल उठा और उन्होंने महर्षियों को अर्घ्य निवेदन किया। राजा का वह अर्घ्य शास्त्रीय विधि के अनुसार स्वीकार करके महर्षि ने उनसे कुशल मंगल पूछा। धर्मात्मा विश्वामित्र ने क्रमशः राजा के नगर, खजाना, राज्य, बंधु बांधव, मित्र वर्ग आदि के विषय में कुशल प्रश्न किया। राजन, आपके राज्य की सीमा के निकट रहने वाले शत्रु राजा आपके समक्ष नतमस्तक तो है ना? आप उन पर विजय तो प्राप्त की है ना? आपके यज्ञ, याग आदि देव कर्म और अतिथि सत्कार आदि मनुष्य कर्म तो अच्छी तरह संपन्न होते हैं ना? Inform the king about me, the Sega Vasishtha belonging to the line of Kusha. Vishwamitra belonging to the line of Kusha, the son of Gadi, having arrived at the door, hearing the aforesaid utterance of the Sega and the support on by the command, all them ran fast to the king's apartments with the awe-stricken mind. Reaching the royal apartments at once, they forthwith reported to the king Dasrath, belonging to the line of Ikshvaku, the news of the saga. Vishwamitra, having arrived at the portals, overjoyed to hear the aforesaid statements of theirs, the king, full of devotion, went forth to receive him along with his family priest Vasishtha, even as Indra would go to the meet Brahma. Seeing the hermit of the astral vows, the shining with the effulgence, the king with the most cheerful countenance thereupon offered to him water to wash his hands with, accepting the water for washing the hands with the and other attendants offered by the king with the ceremony as enjoined by the scripture. The duly inquired of the king after his health and prosperity. The exceedingly pious Sega Vishwamitra also duly inquired after the welfare of the king, capital, treasury, kingdom, relations, and friends. He then said, I hope all your vassals are fully submissive to you and your enemies subjugated. इसके बाद महाभाग मुनिवर विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी तथा अन्य ऋषियों से मिलकर उन सब का यथावत कुशल समाचार पूछा। फिर वे सब लोग प्रसन्नचित होकर राजा के दरबार में गए और उनके द्वारा पूजित हो यथा योग्य आसनों पर बैठे। तदंतर प्रसन्नचित परम उदार राजा दशरथ ने पुलकित होकर महामुनि विश्वामित्र की प्रशंसा करते हुए कहा, हे महामुनि, जैसे किसी मरणाधर्म मनुष्य को अमृत की प्राप्ति हो जाए, निर्जल प्रदेश में पानी बरस जाए, किसी संतानहीन को अपने अनुरूप पुत्र पत्नी के गर्भ से पुत्र प्राप्त हो जाए,
खोई हुई निधि मिल जाए तथा किसी महान उत्सव से हर्ष का उदय हो, उसी प्रकार आपका यहाँ शुभागमन हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। आपका स्वागत है। आपके मन में कौन सी उत्तम कामना है जिसको मैं हर्ष के साथ पूर्ण कर सकूं? And are your duties like the pouring oblations into the fire in relation to God and the human beings, newcomers duly discharged, name eating, embracing in the proper order of sequence Vasishtha, those of the seer, Vamdev, and so on, who were presented there? He inquired after their welfare, so the tradition goes, delighted in mind. They all then entered the court of the celebrated King Dasratha and received with the attention by him, took their seat according to their respective rank. Thrilled with joy and highly magnanimous king then spoke with the delighted mind to the great Sega Vishwamitra, glorify him as follow: I consider your advent preciously as welcome as securing nectar in one's own hand, as rainfall in the waterless tract, as the actual birth of the son through a wife becoming oneself to one without a child, as a recovery of the treasure irritably lost, or joy processing from festive occasion. O great saga, wonder the supreme object of your desire, I can delightful accomplish and how. ब्रह्मन, आप मुझसे सब प्रकार की सेवा लेने योग्य उत्तम पात्र हैं। मानद, मेरा अहोभाग्य है जो आपने यहाँ तक पधारने का कष्ट उठाया। आज मेरा जन्म सफल और जीवन धन्य हो गया। मेरी बीती हुई रात सुंदर प्रभात दे गई, जिससे मैंने आज आप ब्राह्मण शिरोमणि का दर्शन किया। पूर्व काल में आप राजर्षि शब्द से उपलक्षित होते थे, फिर तपस्या से अपनी अद्भुत प्रभा को प्रकाशित करके आपने ब्रह्मर्षि का पद पाया है। अतः आप राजर्षि और ब्रह्मर्षि दोनों ही रूप में मेरे पूजनीय हैं। आपका जो यहाँ मेरे समक्ष शुभागमन हुआ है, यह परम पवित्र और अद्भुत है। हे प्रभु, आपके दर्शन से आज मेरा घर तीर्थ हो गया और मैं अपने आप को पुष्य नक्षत्रों की यात्रा करने वाले पुण्य क्षेत्रों की यात्रा करके आया हुआ मानता हूँ। बताइए, आप क्या चाहते हैं? आपके शुभागमन का शुभ उद्देश्य क्या है? You are deserving of every service from me and have called at my place through my good luck. O bestower of honor, my birth stands fulfilled and my life is blessed today. My night has culminated in the proportions sunrise, in that I have seen the foremost of the Brahmanas in you, formerly distinguished by the appellation Rajarshi, a royal Sega. You have since earned the status of the Brahmarshi, Brahmana Sega, your splendor having been brightened by your asceticism. You are thus worthy of the adoration to me in many ways. Your visit to me has been wonderful in that it has proved to be highly purifying to me, O Brahmana Sega. आप उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि आप
की कृपा से अनुग्रहित होकर आपके अभीष्ट मनोरथ को मैं जान लूँ और अपने अभ्युदय के लिए उसकी पूर्ति करूँ। कार्य सिद्ध होगा या नहीं, ऐसा संशय को आपके मन में स्थान न दीजिए। Nay, by virtue of your very slight, O Lord, I have visited all scared place. Pray to tell me what object is shouted to be accomplished by the you through your advent to my capital favored by you. I wish to promote your cause. You need not entertain any doubt about the success of your mission, O Sega of noble views. आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगा, क्योंकि सम्माननीय अतिथि होने के नाते आप मुझ गृहस्थ के लिए देवता हैं। हे ब्रह्मन, आज आपके आगमन से मुझे संपूर्ण धर्मों का उत्तम फल प्राप्त हो गया है। यह मेरे महान अभ्युदय का अवसर आ गया है। आई शैल फुल्ली accomplish योर ऑब्जेक्ट फॉर बीइंग एन हॉनर्ड गेस्ट। यू आर अ veritable God to me. This is an occasion for the great rejoicing. Come to me as well as to my family. Rejoicing come to me as well as my family, O Brahmana Sega. And the highest religious merit proceeding from your visit has fallen to my lot in its entirely, O Holy One. मनस्वी नरेश के कहे हुए ये विनय युक्त वचन, जो हृदय और कानों को सुख देने वाले थे, सुनकर विख्यात गुण और यश वाले सम दम आदि गुणों से संपन्न महर्षि विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। द ग्रेट सागा विश्वामित्र whose renown occasioned by the excellence had spread far and wide and who was distinguished by the virtue experienced supreme delight on hearing the aforesaid prayer, which was not only pleasing to the heart but also to the ears, addressed as it was in polite word by the high souled monarch. इत्यार्षे श्री रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 18वां सर्ग संपूर्ण। Thus the end of Canto 18 in the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of the Rishi and the oldest epic. भगवान श्री राम की जय हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। ओम नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
સિયા રામ જય જય રામ, સિયા રામ જય જય સિયા રામ, સિયા રામ જય જય રામ, સિયા રામ જય જય સિયા રામ, રઘુપતિ રાઘવ રાજા રામ, પતિત પાવન સીતારામ. જય શ્રી રામ, જય શ્રી રામ. Thanks for watching. Like, share and subscribe. Thank you. Jai Shri Ram. Janki? Oh Janu. Thank you. Jai Shri Ram.